ओके सो आम जमी लास्ट क्लास रे देखिले आम फोकस टाइप रे कहले कि लाइन फोकस टाइप एंड पॉइंट फोकस टाइप. सो लाइन फोकस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, point focus is divided into 4 types. So in case of line focus there will be a parabolic structure. You have to remember this point. Parabolic structure means it is a line focus. So first one, if we will go for the line focus means first one will be what? First one will be a cylindrical parabolic trough. That means parabolic structure will be there in case of line focus type. So if we will go for the line focus, first one here see cylindrical parabolic type बा cylindrical parabolic trough हमें कही परिबा. ओके सो ट्रफ मीन्स जो येटा आमर माने जगहटा बा जो जगार आम रखुचे कौन कनसेंट्रेट करवा जो जगार फॉल्ट कर सोलार एनर्जीटा से ट्रफ बोली कहचे. तो माने तार स्ट्रक्चरटा केमितिया ना से सिलिंड्रिकल आउ पाराबोलिक एटा तार स्ट्रक्चर एटा तार ना आम कहीपर दिस इज द ट्रफ इन ए डिजाइन कॉल्ड सिलिंड्रिकल पाराबोलिक जोटी कि आम कौन करवा डिफरेंट टाइप रो कंपोनेंट रखा देन सोलार एनर्जी विल बी फॉल ऑन दैट सिलिंड्रिकल पाराबोलिक ट्रफ. So we will go for one by one, then we will go for fixed mirror, then linear Fresnel lens collector. Here there is a short form LFLC. Okay, LFLC, linear Fresnel lens collector. Maybe it is asked in your semester LFLC. In short, it may be asked. So you have to remember LFLC means linear Fresnel lens collector. तो से गोटे टाइप रो लेंस कलेक्टर तो कलेक्टर रहिला but it is a type of lens. That lens is known as linear Fresnel lens. Okay, so first one is your now cylindrical parabolic trough type and it is coming under the line focus. Two things you have to remember. One is line focus. That means line focus means what? It is concentric type. First you have to remember concentric type under आसुची, then आक under आसुची, line focus under. सेमती पॉइंट फोकस जो पड़ो कनसेंट्रेटिव टाइप अंडर आसूची पॉइंट फोकस अंडर आसूची. ओके तो फर्स्ट जो सिलिंड्रिकल पाराबोलिक ट्रफ हम देखा इट कंसिस्ट ऑफ ए पाराबोलिक इट इज कंसिस्ट ऑफ ए ट्रफ ए मेटल ट्यूब रिसीवर माने गोटे आमको रिसीवर ताले कहा कहबा जोटा आम ऑब्जर्वेशन कहूचे रिसीवर ट्यूब जहाँ ऑब्जर्वेशन ट्यूब से एका जिनस आम ऑब्जर्वेशन लेख रिसीवर लेख तो एका आम आपको कहीं कहूचे ना जी रिसीव करुच्ची कि करुच्ची ऑब्जर्वर ट्यूबटा तो सी ही ऑब्जर्व करुच्ची तो रिसीवर ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशन ट्यूब और ऑब्जर्वर ट्यूब. इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रफ. तो ये जो ट्रफ कहला तो से जो जगहटा देखो जमी कहती पाराबोलिक शेप ये जिनटा सब मन रख पाराबोलिक माने ये टाइप रो शेपटा आटा केमती नेचर इन सिलिंड्रिकल इन नेचर. तो देखो जोटा पाराबोलिक शेप आम कहूचे दिस इज द शेप. ओके 3D शेप दिस इज ए 3D डायग्राम. तो हियर इट इज योर पाराबोला टाइप रो स्ट्रक्चर अच्छी. तो ये आउ गोटे जिन कौन ये कंसिस्ट ऑफ ए मेटल ट्यूब रिसीवर. तो गोटे तो ट्रफ आम जानीगले ता सहित गोटे रिसीवर आर देयर. तो से रिसीवर इज व्हाट दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशन. So here is the observer tube or receiver tube and where it is present, so you have to remember it is present in the focal line. The observer tube or receiver tube is present of the focal line. The focal line means what? The line which is present at the which is intersects the focus of the system or focus of the collector. तो से collector जोटा center point बा फोकस पॉइंट सब दिस इज योर सेंटर पॉइंट बा फोकस पॉइंट से लाइन टाड़िले तो से जो जगह प्लेस होती तुम ट्यूबटा तो से सेंटर रे बा फोकस रे प्लेस होती माने ऑब्जर्वर ट्यूब इज प्रेजेंट इन द फोकल लाइन ऑफ द कलेक्टर. ये जिनटा तुमको मन रखार अच्छी मे बी ओरिएंटेड इन एनी वन ऑफ द 3 डायरेक्शंस. तो से जो आम ऑब्जर्वर ट्यूबटा कहूचे तो से जेकोसी डायरेक्शन में भी प्लेस हो पार. तो जेकोसी डायरेक्शन माने आइदर से ईस्ट हो बा वेस्ट हो बा नॉर्थ साउथ बा पोलार दीज आर द डायरेक्शन. तो जेकोसी डायरेक्शन आम ताको प्लेस करी परिबा.
कहीं तो से चेंज कहीं हो ना अकॉर्डिंग टू द सन पोजीशन भी चेंज हुए अकॉर्डिंग टू सन पोजीशन से कौन करिवो ट्रैक करिवो टू ट्रैक द सन जेमते हम पढ़िथिले एमपीपीटी रे मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग that means it will track the position of the sun according to the sun's position it will move with the observer plate position so that it can directly receive the solar energy if the point is here but solar energy or sun position is far away then it may not receive the more amount of solar energy if the position is same the observer tube position and the sun's position is same or same direction then it can maximum receive the solar energy that's why tracking is needed तो may be oriented in any of the direction जे कौन सी direction हमें रखी परिवा तो this receiver tube is also black paint always I have already told you जे कौन सी जगह रे in any type of collector the observer tube always black painted so it is also in a case of cylindrical parabolic trough it is also black coated you have to remember a place in what the focal line of the parabolic or cylindrical parabolic trough the sun rays asila this the trough is means what it is made up of glass first thing you have to remember it is coming under the concentrating type that means here it will be use of lens or glass glass use will be there if the lens glass is there then it is coming under the concentrating type that means this cylindrical parabolic trough is made up of glass that means it is a reflector तो sun rays आसिला जो ये पड़िला देखो fall on the reflector here is also it will fall on the reflector then after reflecting from the cylindrical parabolic trough it will reach through the center point or focal point तो से focal point रे हमें कौन रखीचे the observer tube is present on the focal line so the rays will be fall on the observer tube and already we know observer tube is black painted that means it will absorb all the rays coming from the reflector means what cylindrical parabolic trough so absorb kala pore it will generate the heat energy then from the heat energy you can generate the electrical energy okay so here is the tracking mechanism you see tracking mechanism so question may be asked why tracking mechanism is needed in case of solar collector तो tracking हमको कहीं की दरकार because as the sun's position changes in respect to or with respect to time so you have to track the sun why you will track because if you will sun's position and your observer tube or observer plate or position it is same or same direction it is present then it can receive maximum amount of solar energy but if the direction of the observer plate and direction of the sun's rays are different then it may not receive that amount of solar energy so you have to track the sun or you can say the mechanism is tracking mechanism so in any type of collector you need the tracking mechanism so here is the tracking mechanism parabola means parabolic structure sun rays receiver means observer tube so this is all about or this is all consist of a cylindrical parabolic trough okay concentration area is 1 to 6 meter square तो जोटा हमें तैयारी करूचे ये single glass not a strip or not any part of the glass it is a single glass this is also important point single glass in a single glass you will made the cylindrical parabolic trough तो ये गोटे problem अच्छी तो से problem will be avoided by the fixed mirror strip तो सेटा हमें देखिबा टिके आगे तो आगे हमें कौन जानिबा ना से जो सिंगल पीस रो ग्लास रे विल मेक द सिलिंड्रिकल पैराबोलिक ट्रफ तो तार एरिया केते कहूची इट एरिया इज 1 to 6 मीटर स्क्वायर व्हिच एरिया तो सिलिंड्रिकल पैराबोलिक ट्रफ 1 to 6 मीटर स्क्वायर दैट मींस लार्जर ओके सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए सिंगल गोटे ग्लास रे विदाउट एनी पार्टीशन और विदाउट एनी ब्रेक ऑफ द ग्लास इफ वी आर making a cylindrical parabolic trough it is very difficult and that size is what 1 to 6 meter square that means it is the area of the cylindrical parabolic trough then concentration ratio 10 to 30 then what is the meaning of concentration ratio so it is also important what is concentration ratio so concentration ratio means it is a ratio in between the solar energy entering into the collector you can write
solar energy entering to the collector divided by जेतिकी सोलार एनर्जी कलेक्टर जो भी टाइप रो कलेक्टर आम यूज करूँ से फ्लैट प्लेट हो बा कंसंट्रेटिंग बा नॉन कंसंट्रेटिंग हो द टोटल अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी एंटरिंग टू द कलेक्टर डिवाइडेड बाय एनर्जी रिसीव्ड बाय द कलेक्टर ये जिनस सबुठी आम पढ़ी छोट बड़ी भी पढ़ीचे जो भी आम पढ़ीचे जेतिकी टोटल अमाउंट फॉर एग्जांपल इल्यूमिनेशन रे इन केस ऑफ 5th सेमिस्टर there is a paper utilization of electrical energy. There is a factor called utilization factor. That means source ru jetiki light asuchi it may not be all the light rays may not be utilized by the consideration surface. जो surface को हमें consider करूचे jetiki light source ru asuchi it may not use the 100% light of the source. So किछिटा अलगा जगह रे पडुची. That means सेठी utilization factor आसुची गोटे ratio रो value आसुची. So same जिनसे एठी हमें कहूचे if you are using any type of collector sun rays ru jetiki asuchi the sun rays entering to the collector and received by the energy received by the collector तो से collector रे केते receive होउची so there will be a difference in between these two things so ratio value will be there and that ratio is known as concentration ratio and it is same for all the all type of collector आम जहाँ ए पढ़ा एवं आम पढ़ुचे व्हाट लाइन फोकस पॉइंट फोकस नॉन फोकस इन ऑल दिस टाइप ऑफ कलेक्टर्स द concentration ratio is different but the value will be changed varied the value will be very much high if the concentration ratio is very much high that means that type of collector is very much suitable for the absorption or collection of the solar energy. Here the value is 10 to 30. So obviously you know that if it is coming under the what concentrated type collector the concentration ratio will be always high but compared to different type of concentrated type there is a single one later you will see single type of collector which is having very much high concentration ratio that means that one is very much suitable or very much perfect for the absorption and collection of the solar energy. Then length is more than aperture width तो तार जो लेंथ टा अच्छी कहार सिलिंड्रिकल पैराबोलिक ट्रफ रो इट इज मोर देन द अपर्चर विड्थ ता विड्थ माने कोटा दिस इज द विड्थ द लेंथ इज मोर देन अपर्चर विड्थ टू मोर हला लेंथ तो कंस्ट्रक्शन में तुम ए जिंस कहि परिबो इट इज मेड अप ऑफ ए ग्लास एंड स्ट्रक्चर इज सिलिंड्रिकल पैराबोलिक ट्रफ साइज इज 1 to 6 meter square and length is greater than the aperture width. Concentration ratio is 10 to 30. So this is all about your cylindrical parabolic trough. The next one is your fixed mirror solar concentrator. So in a case of cylindrical parabolic trough the problem is that problem means कौन टा हमको difficulties आसिला difficulties means what जो cylindrical parabolic trough हमें generate करूथिले बा construct करूथिले so it is very much difficult to construct a cylindrical parabolic trough with a single glass so सेटा it may be break तो सेठी जो difficulties आसिला for making a cylindrical parabolic trough in a single glass so सेटा को हम न करिकी हम बर्तमान कौन करिबा ना mirror strip will be used that's why the name is written fixed mirror strip not using a single glass we will use the mirror strip छोटो छोटो strip रे हम ताकू यूज करिबा that means it is fixed in nature ये movable नुहे सेठी भी cylindrical parabolic trough is fixed in nature movable किए observer tube will be moved by the help of tracking mechanism observer plate is moved or observer tube is moved to track the sun but the cylindrical parabolic trough is fixed in nature but here the construction is fixed mirror strip that means it will also fixed in nature it is always written fixed mirror strip it is not varying in nature varying किए observer tube एठी भी observer tube अछि जो भी concentrator बा जो भी तमे collector पढिबो there is always a observer tube and that is always black painted this is fixed for everything but construction may be different but there is a observer tube and that is painted with black color. Long narrow mirror strips are used in this concentrator देखो mirror strips are there this is a mirror strip this is a mirror strip
These are the mirror strip. It is not a single glass. It you can see 1 2 3 4 5. There are 5 number of mirror strips. That means छोटो छोटो खंडर आम रिफ्लेक्टर नेले, not a single glass. तो से जो problem थिला in case of cylindrical parabolic trough, it can be avoided by the fixed mirror strip type solar collector. Then here is your observer tube. This is the observer tube. तो से जो mirror strip रो image टा, that image creates a cylindrical shape. तार जो image टा create होची, these are the image of the fixed mirror strip. These are the image. It creates a cylindrical shape. तो shape टा जो create करूची, it is looks like a cylindrical shape arranged in a circular reference cylinder with a tracking receiver tube. तो सबला मन रखो tracking component टा किए observer tube. तो एठी जेमती observer tube और observer pipe is here, that means this is the tracking component. But fixed जिनस किए mirror strip. That's why it is written arranged in a circular reference cylinder. Cylinder is a circular thing. तो सेमती circular रे arrange कराइछि काकू mirror strip को से माने fix observer tube टा कोन करिवो ना चेंज हबो पोजीशन तार अकॉर्डिंग टू द सन रो पोजीशन. ओके, तो concentration ratio is same as mirror strip. एठी जदि mirror strip 5 अछि, that means यदि हमें कहूचे concentration ratio is 100, that means there are 100 numbers of mirror strip. Mirror strip जेतिकी concentration ratio सेतिकी. The concentration ratio केते ना 10 to 100. तो धीरे धीरे हमें जतबे आगु आगु जिबा concentration ratio धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जिवो, you can see that. Okay, then next one is your linear Fresnel lens collector. These two are the what? Line focus type. Linear Fresnel lens is also line focus type. Consists of fine linear grooves on surface of refracting material. जदि हमें डायग्राम को तमे देखि परुछ तो डायग्राम रे देखो, these are the Fresnel lens. These are the Fresnel lens. Okay, they are arranged in such a manner that सेमानकर जो अछि generally optical quality plastic on one side and flat on other side. तो जोटी solar radiation टा पड़िबो on that side, that is flat in nature. Here the solar radiation will be fall, that means they are flat in nature. In their back other side there are optical quality plastic are there. Here is the flat type, here is the optical quality fibers plastics are there on the other side. So this is the construction of a linear Fresnel lens. So solar radiation will fall on the flat type, but they are designed in such a way that here written angle of each groove. So each groove gote groove को जदि हम नबा, that angle is such designed, ता angle एमती design हेतिबो, there looks like a cylindrical shape, is designed to make optical behavior similar to a spherical lens. Lens टा spherical जेमती बा cylindrical तमे कहि परिबो. तो angle of the linear group सेमती design कराइछि. Then concentration ratio 150 to 400. आमे जो आरो दिटा देखिथिले cylindrical parabolic trough आउ cylindrical parabolic trough हला हमरो fixed mirror strip हला ताकोटु टिक अधिका कार आसिला linear Fresnel lens collector. तो माने linear grooves. तो आगुटा आरो अछि कोन ना cylindrical Fresnel lens solar collector. सेठी cylindrical in nature, एठी कोन ना linear in nature. बुझिला. तो linear माने कोन होची ना गोटे पटला flat आउटेला optical quality plastic on other side. बुझिला. तो जोटी fall करिवो से मानकर एंगल टा एमिति डिजाइन हेची, they looks like what? Spherical भली हमकु behave करिवो. Okay, so this is your linear Fresnel lens collector. The next one, point focus type. Line focus हमें पढ़िले, तो point focus रे चारटा टाइप में पढ़िबा. Point focus system utilize either an array of mirror to focus reflected solar radiation onto a receiver located at the focal point. तो ए जिनसटा मन रखिबो. तो focal point रे से सबले प्लेस हेतिबो कि observer plate टा. This is your focal point. So से focal point रे तमर रहितिबो कि observer plate टा. तो तमे reflector लगेई कि by using the reflector it will be point to the focal point. तो से जो observer tube रे जाकी पड़िबो, observer tube कोन करिवो, observe करिवो. तो it is 4 types: parabolic disc collector, here it is dish, DISH, parabolic disc collector, hemispherical bowl mirror type, circular Fresnel lens. Generally linear Fresnel lens is a line focus type, but circular Fresnel lens is a point focus type. So one thing you have to remember, line focus and point focus difference is what?
In case of line focus, the concentration ratio is little small, but in case of point focus time, concentration ratio is very much high. जो कहती गोटे कलेक्टर अच्छी जार सबुठ अधिका बेसी सुटेबुल से क्या अंडर आसो यही पॉइंट फोकस अंडर रे कहीदे दिस वन इज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट कहीं ये तुम कंसंट्रेशन रेशियो इज वेरी मच हाई। तो आम जो देखिए पाराबोलिक ट्रफ बा पाराबोलिक डिस्क कलेक्टर रिसीवर इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द पाराबोलाइडल रिफ्लेक्टर। तो तार डायग्राम ये आम देखिपर हियर इज द व्हाट पाराबोलाइडल डिस्क कलेक्टर जमती घरे आंटीना लगुच जो टीवी रो तुम देखती तो ये से टाइप जिनस तार गोटे सपोर्ट स्ट्रक्चर अच्छी ट्रैकिंग डिवाइस अच्छी तो ट्रैकिंग डिवाइस साहाଯ୍ୟରେ सब कौन करिया सन रो पोजिशन अनुसार आम चेंज करवा। तो रिसीवर रहा तार कौटी सेंटर पोजिशन आम देखा सेंटर पोजिशन आम देखा कौन रोच आमर रिसीवरटा रोच। तो ये जो रिसीवरटा रहा सेंटर पोजिशन कि क्या अंडर आसूँ पॉइंट फोकस अंडर रे लाइन फोकस अंडर ये आसू ना कहीं ये गोटे सिंगल पॉइंट रे फोकस कर रिसीवरटा को किसी गोटे सपोर्ट स्ट्रक्चर रहा ये तुम कौन रहा स्पेरिकल इन नेचर माने पाराबोला टाइप रो नेचर तार। तो से कौन कहे पाराबोलाइडल डिस्क बुझेगा। तो पाराबोला टाइप रो तार स्ट्रक्चरटा सपोर्ट करने कि स्ट्रक्चर अच्छी तार ट्रैकिंग मेकानिज्म अच्छी आ फ्लूइड ट्रांसफर पाइप आर देयर। तो फ्लूइड ट्रांसफर पाइप मीन्स आफ्टर हिटिंग जो अब्जॉर्प्शन हो सारा जो लिक्विड रे हिट ट्रांसफर हम से जो किसी ट्यूब्स आर देयर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देयर रिसीवरटा कौटी प्रेजेंट हम फोकाल पॉइंट रे बा सेंटर पॉइंट रे सेटा केमती देखा पाराबोला टाइप रो तार स्ट्रक्चर। तो तार आउ गोटे जिन जो आम देखिपर ए डिस्क ऑफ 6 मीटर डायमीटर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 200 कर्व मिरर सेगमेंट। तो ये भी मिरर सेगमेंट नवा 200 कर्व मिरर सेगमेंट से सेगमेंट गुड़ा मिरर सेगमेंट कर्व हो 200 ये जो डायमीटरटा के 6 मीटर जो यहाँ आम डायमीटर नौ 6 मीटर। तो 6 मीटर डायमीटर से कौटा पाराबोलाटा कंसिस्टिंग ऑफ 200 कर्व्ड मिरर सेगमेंट। देन कौन कहला ऑब्जर्वर हैज ए कैविटी शेप। तो कैविटी शेप रो डायग्राम जदि आम देखा यहाँ आमर कौन है कैविटी शेप रही किए से जो पाराबोलाइडटा। देन कौन कहला इट रिक्वायर्स 2 एक्सिस ट्रैकिंग। तो 2 एक्सिस ट्रैकिंग यहाँ गोटे इंपोर्टेंट थिंग कह जाए डुअल एक्सिस ट्रैकिंग। द 2 एक्सिस ट्रैकिंग इज ऑल्सो नोन एज डुअल एक्सिस ट्रैकिंग। तो डुअल